टीचिंग साइंस प्रोसेस स्किल्स। साइंस प्रोसेस स्किल्स जो हैं अगर वो हम टीच करते हैं, देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू टीचिंग ऑफ साइंस। साइंस को टीच करने के, सिखाने के मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं। सम ऑफ मेजर अप्रोचेस इंक्लूड, जिनमें से बुनियादी अप्रोचेस शामिल हैं फैक्चुअल अप्रोच, कंसेप्चुअल अप्रोच, modular approach and process approach. Factual approach. This approach is focused on transfer of factual knowledge of science to the students. ये approach जो है, इसका जो फोकस होता है, मरकज़ होता है, इसकी जो तवज्जो होती है वो ये है कि फैक्चुअल नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है, मुंतकिल करना होता है स्टूडेंट्स में। इट इनकरेज रूट लर्निंग, ये रूट लर्निंग को की हौसला अफजाई करती है। इन दिस प्रोसेस, इन दिस अप्रोच, इस तरीक़ाकार में द स्टूडेंट्स आर जनरली पैसिव। स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसिव होते हैं, रिसीवर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज हासिल करने में। लिटल एम्फसाइसिस इज गिवन टू टीचिंग, टीचिंग पे कम जोर दिया जाता है। एंड लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स, और कंसेप्ट्स जो हैं वो लर्न किए जाते हैं साइंस प्रोसेस स्किल्स, साइंस प्रोसेस स्किल्स के साथ और नेचर ऑफ साइंस और साइंस की फितरत के साथ। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंक्लूड, जो सबसे आम मेथड ऑफ टीचिंग इस्तेमाल होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। लेक्चर मेथड उसमें है, recitation method है। This approach has been criticized for conveying the distorted image of science as a mere collection of facts. Conceptual approach, as the same indicate, जैसा कि indicate करता है, this approach emphasizes learning of concept। ये जो approach है वो निशानदेही करती है learning of concepts को याद करने में, सीखने में। अंडर दिस अप्रोच डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड, इस अप्रोच के थ्रू मुख्तलिफ तरह के तरीक़ाकार इस्तेमाल होते हैं फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए, टीचिंग साइंस कंसेप्ट, साइंस कंसेप्ट के टीचिंग के लिए। फॉर एग्जांपल यूजिंग कंसेप्ट मैप्स, जब आप कंसेप्ट मैप्स का इस्तेमाल करते हैं एज इंस्ट्रक्शनल टूल्स, इंस्ट्रक्शनल टूल्स के साथ, इज़ वन वे ऑफ टीचिंग ऑफ कंसेप्ट, ये टीचिंग कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। यू मे रीड अबाउट दिस मेथड इन डिटेल इन सम अदर यूनिट। मॉड्यूलर अप्रोच, दिस अप्रोच ले एम्फसाइजेस, ये अप्रोच जो है वो जोर देती है टू टीच इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए एट देयर पेस, एट देयर प्लेस, उनकी अपनी जगह पे। डैट इज बोथ द स्लो एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन कैन यूज इट, ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए होती है, उनकी पेस के लिहाज से, सीखने की सहूलियत के लिहाज से कि वो स्लो लर्नर हैं या फिर फास्ट लर्नर है। एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन कैन यूज इट फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स और डेवलप, इसके लिए सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। ये लर्निंग मॉड्यूल इज़ ए सेल्फ लर्निंग पैकेज, एक लर्निंग मॉड्यूल जो है वो सेल्फ लर्निंग पैकेज है डीलिंग विद सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर यूनिट। फॉर एग्जांपल ए यूनिट ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर module is structured in such a way that learner can choose the objectives that he wants to achieve. Then select the relevant material, फिर relevant material जो है वो select करें। in a module के अंदर a number of variety of methods of learning are given, the learner chooses the method he feels is best. In the module, provision is made for students to assess his or her achievements, find out gaps in learning. In this approach, teacher is facilitator, टीचर बतौर facilitator होता है। This approach focuses on content, process or both. Process approach. This approach has science process as the main objective of teaching. ये साइंस प्रोसेस के मेन ऑब्जेक्टिव, इसमें साइंस प्रोसेस की टीचिंग के हवाले से है। दिस अप्रोच इज़ एडवोकेटेड ड्यू टू इट्स इफेक्टिवनेस, ये अप्रोच ज़्यादा
इस्तेमाल करने की ताकीद की जाती है, क्योंकि इसकी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस है मुतासर कौन फॉर गिविंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस, साइंस की फितरत की अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए, एंड हाउ साइंटिफिक नॉलेज इज़ डिवेल्प्ड, और कैसे साइंटिफिक नॉलेज डिवेल्प होता है थ्रू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एंड इंक्वायरी के थ्रू। इट आल्सो प्रोवाइड द लर्नर्स एंड अपॉर्चुनिटी टू यूज़, ये मज़ीद जो है वो प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है लर्नर्स की अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड प्रैक्टिस साइंस, और प्रैक्टिस करती है साइंस की प्रोसेस स्किल्स, साइंस प्रोसेस स्किल्स के। साइंस प्रोसेस स्किल्स are said to have a wider application in many subjects, not only in science and also in our daily life. Activity-based method, inquiry method and project methods are example of methods which can be used to teach science process skills. One of the misconception about process approach is that the teacher will focus on teaching science process when he will teach science content. The pupils can learn content through application of science process skills. This will enable children to learn both science process and content at the same time. For example, when a teacher gives an activity in which children are given a variety of flowers and are asked to study their characteristics like color, size, shape, nature, number of petals, and also compare different flowers, और मुख्तलिफ तरह के जो फूल होते हैं उनका मवाजना किया जाता है टू स्टडी, उनका मुताला करने के लिए, हाउ दे आर सिमिलर आर डिफरेंट, कि कैसे वो सिमिलर हैं, एक जैसे या मुख्तलिफ। दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू डेवलप स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेटिंग द ऑब्जर्वेशन. इट विल आल्सो हेल्प देम गेन concrete knowledge about variety in nature of flowers and parts of flowers, or they may be asked to observe the growth of plant and communicate the observation, developing a chart, graph, or in table form, or they may measure temperature of water contained in the bottles of different colored, या फिर एक वाटर टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है कि जो कि मुख्तलिफ रंग की बोतलों के अंदर मौजूद हैं, टू फाइंड आउट विच कलर अब्सॉर्ब मोर हीट फ्रॉम सनलाइट. The skill of interfering can also be practiced by giving the student a box containing an unknown object. The students are asked to find out what is in the box without opening it. They may listen to sound, feel the weight and smell the box to find out what is in the box. Then, based upon their observation, they explain about the object inside the box. Their explanations are inferences based on their observation. As you may have noticed that the skill of inference depends upon efficiency in making observations. At elementary level, the teacher can also help and guide the students to perform simple experiments like finding the factors affecting the flight distances of paper airplanes, or investigates the quality of different brands of tissue papers by checking which one is more absorbent. In 1960s, American Association of Advanced Science AAAS started a program of science for elementary level by name of Science a Process Approach. This program was focused on teaching science process skills. इस प्रोग्राम का जो फोकस था, तवज्जो जो थी वो साइंस टीचिंग प्रोसेस पे थी. AAAS chalked out the competency indicator for each of the 13 science process skills. These are given below, जो के नीचे दिए गए. The competency indicators can guide the teachers about what children should be able to do to achieve mastery of
process. Read these indicators carefully and think of some simple science activities in which these skills could be used. Use the indicators to design activities. Indicators को इस्तेमाल किया गया activities को design